Thank you, Dr. Aditya. So I will introduce my next speaker, which is Dr. Health Safety Sciences in Kansai University. Very much. Opportunity today. I'm very glad to be here today. Yes, this chart shows number of missing by natural hazards in Japan after 1945 second. You can see, we can say disaster education started not after 1959 in Japan, either term or activity of disaster education in 1947 at latest, because we can see the teaching unit regarding disaster education. Disaster education in Japan, international curriculum published in investigations. So my first. If anyone in the audience, I will introduce the next speaker. Our next speaker is. So I have this that job. Necessary legislation to promote or fund immunization programs. Number one. Number two, health service in person in Karachi and the other audiences who have joined us virtually. To my colleague Julian, based in South Anderson in Steps Network, and we can move on to my presentation. Is I would like to receive your feedback out of my presentations. First question is, what are avoidable deaths? Second, what are avoidable disaster deaths? And then the third is, who carries the burden of disaster deaths or avoidable disaster deaths? And finally, how can we reduce avoidable disaster deaths? This is really fascinating. The previous speaker I was listening to the presentation, and there are some interesting points that I just want to follow up from there. The first is, hardly, I think, which is very relevant to avoidable deaths. We work within the context of disasters and risk reduction. Next slide, please. Now, so please take a minute or two. Any prior knowledge on avoidable deaths and avoidable disaster deaths. So just, if you could, because it's not only for our participants in Karachi. So please take a minute. And then the next question is, based on your current For a writing session in which we will provide different scenarios to the journalists and the students from media sciences, and they need to write a report we'll give them access to the internet. They can take the information from there and they can prepare a report. And Murtaza Noor Sahab and Bhatti Sahab will chair that session. And after that, we'll conclude the workshop and we'll distribute the certificates to all the participants. So we can go for the lunch and we'll meet here sharp at 2:30. Thank you. होनी चाहिए कि हम इफेक्टिव डिज़ास्टर रिपोर्टिंग कर सकें और ये जो ऑब्जेक्टिव है कि डेथ्स को अवॉइड किया जा सके। और जैसे डॉक्टर वासे ने कहा कि ना सिर्फ डेथ्स को अवॉइड करना बल्कि डिसेबिलिटीज़ को भी अवॉइड करना। इसका सबसे बेहतरीन तरीका एक बहुत अहम बात मैंने कहीं सीखी कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है और उसमें आप अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके नतीजे में पॉलिटिकल फोर्सेस अथॉरिटीज़ मूव होती हैं और वो एक्शन लेती हैं। और अगर कोई डिज़ास्टर रिपोर्ट नहीं होता और चीज़ें जो है अननोटिस जाती हैं, उसके नतीजे में लोगों की जानें जा सकती हैं, लोग डिसेबल हो सकते हैं, उनका माशी नुकसान हो सकता है। तो ये जो डिज़ास्टर्स में इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग है और चीज़ों को हाईलाइट करना है, ये कुछ लोग कहते हैं कि सेंसेशनलिज्म है, लेकिन ये सेंसेशनल अगर आप एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं और हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे बात करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी तबाही मची हुई है हमारे सिंध के एरियाज़ में ज़्यादा है और उसमें एक मलेरिया जिसको कहते हैं फाल्सिपारम, एक इसका दो तरह के इसमें पैरासाइट्स होते हैं मलेरिया में। ठीक है, और स्टोरीज, लेकिन आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हमने आपसे सीखा।
صوفیہ میرا پین لیتی آئیے گا. اچھا ہم نے آپ کے ٹیچرس مس آمنہ حماد رمضان مس الفی ہدیانی مس ان تھینک یو آپ کا سارا ایسے نہیں ہے یہ یوں آپ کا نام بھی بتائیں of the role of the media. I would like to thank Mr. Waqar Bhatti and Mr. Murtaza Noor for sharing their experiences and guidance to young journalists. I would like to thank our guest lecturers for their very informative talks. And last but not the least, our participants from outside Karachi. You came all the way here and your presence is delightful to us.